Jai Hind everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the soil, then after we have discussed about the rock and also we have discussed about the soil erosion. So today we will be studying the next topic of the chapter, that is soil conservation. So let us start with the chapter. The topic is soil conservation. So students, this is your chapter. In this we have seen about the rocks. Then after we have seen this diagram in which we were discussing about the granite, marble and the sandstone. After that we have seen the soil, the formation of soil, and then after we have discussed yesterday the types of soil. After that we have also gone through this diagram in which we have discussed the sandy soil, clayey soil and the loamy soil. After that we have discussed about the soil erosion, and today we will be studying about the soil conservation. If you have any doubt from the previous topic, just watch all the videos which were already shared with you all. So if there is any doubt, you can ask me or you can write down in the comment section. You can ask your doubt in the doubt session. So now we will proceed with the topic of the day, that is soil conservation. Soil conservation, that means what we are going to study, how we can conserve our soil, मतलब हमारी मिट्टी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं. The protection of soil from being washed away or blown away by natural forces is called soil conservation. Basically what happens in soil conservation, what we study, the topmost layer of our soil is getting disturbed day by day. It is disturbing day by day. We have discussed in the previous video that the topmost layer of the soil is getting degraded, its quality is getting down because of this soil erosion. That means the topmost layer is washed away by water or blown away by wind. जो सॉइल है उसकी जो ऊपर की सतह है वो हवा से या पानी से ऊपर की लेयर हट जाए और मिट्टी इस तरीके से हमेशा उसका नुकसान होता रहे, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जो भूमि है वो बंजर हो जाती है. इफ़ वी प्रिवेंट दैट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम गेटिंग डिग्रेडेड or from getting washed away by water or from getting blown away by wind, if we conserve it, if we protect it, that is soil conservation. यदि हम अपनी मिट्टी को, अपने मिट्टी के ऊपरी सतह को पानी से बचा पाएँ, पानी से बह ना पाए, और तो और अगर हम बात करें तो जो भी सॉइल है वो हवा के साथ ना उड़ पाए, अगर हम उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन. We can conserve soil by applying the following measures. We can conserve our soil by several measures, several steps to be taken so that we can prevent our soil from getting degraded. That is, first thing is that we should plant trees. Plantation is the best method. Plantation, growing crop, growing plant is the best method to conserve our soil. The first thing what we have to do, we have to grow plant on the area which is barren, which is unfertile. We use different types of fertilizer, organic fertilizer for that, and we try to grow a plant on that particular area. So we can check soil erosion by planting more and more plant in an open ground. What we can do, we can just conserve our soil, our land, just by planting more and more trees. If we plant more and more trees, your soil will be conserved. Okay. The root of the tree, grasses and shrub hold the soil firmly together. What happened? The root of any of the plant grows deeper in the soil. What happened? These root binds the soil with it. What it does, it binds the soil with it, the soil, and they help in binding of the soil so that it cannot be blown away or it cannot be washed off. Okay, so the roots of the plant
or trees or grasses or shrub, they hold the soil, they bind the soil together, and that's why the topmost layer of the soil is not disturbed, is not harmed. Okay, they do not let the top fertile soil to be washed away. If they bind, if the root of the plant bind the soil, the topmost layer of the soil, there it will be easy that the topmost layer of the soil will not be washed away, and this will help in the soil conservation. If we discuss the second type of soil conservation method is by terrace farming. टेरेस फार्मिंग दैट मीन्स टेरेस मतलब आप क्या समझते हैं? टेरेस इज छत, आप बोलते हैं छत। तो होता क्या है, अगर हम धरती में छत की बात करें तो जो टॉप मोस्ट रीजन है, जो धरती की सतह से ऊंचाई पर जो क्षेत्र है, उनको हम टेरेस की कंडीशन में रखते हैं। ओके, बाय टेरेस फार्मिंग दैट मीन्स इन द माउंटेन रीजन इफ वी ट्राई टू प्लांट ट्रीज ओवर देयर, दैट इज टेरेस फार्मिंग. In hilly region, the flow of rainwater is very rapid. What happened in the hilly region, in the mountain region where the mountains are present, the rainwater flows quite fast. What happened? अगर ऊपर से पानी को गिराया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी की स्पीड जो होगी वो बहुत तेज़ होगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ऑल्सो पानी क्या है, पानी की कोई डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक शेप नहीं है जिसकी वजह से वो ऊपर से तेज़ी से नीचे की तरफ बहता हुआ चला आता है. तो क्योंकि माउंटेन हमारा ऊंचाई पर है और धरती हमारी नीचे है, तो धरती की तरफ पानी का बहाव तेज होगा. इन द हिली रीजन द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी रैपिड. इन दैट रीजन, इन द हिली रीजन, द वाटर फ्लोज वेरी रैपिडली. सो व्हाट इट रिजल्ट, it can wash away the water easily. The water wash away the topmost layer of that mountain region easily. तो होता क्या है, जब माउंटेन से पानी बहते हुए आता है तो क्या करता है, जो माउंटेन की जो ऊपरी सतह है उसको वॉश कर देता है. सो इन दैट रीजन वी कैन प्लांट ट्रीज. इफ वी प्लांट ट्रीज इन द माउंटेन रीजन, इन द हिली रीजन, so its root, the root of the plant will bind the soil and it will not be washed away easily. Okay, so in such places like hilly areas, soil erosion can be checked by making terrace on the slope. What happened there, जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर स्लोप्स होते हैं उस एरिया में क्या करते हैं, पत्थर को, मिट्टी को थोड़ा सा बराबर कर देते हैं, थोड़ा सा बराबर जैसे खेत होता है उस तरीके से बराबर कर देते हैं और वहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं. सो दिस हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल. टेरेस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड ऑल्सो अगर जो फ्लैट ज़मीन बना देंगे, अगर हम माउंटेन रीजन में फ्लैट कुछ सरफेस को फ्लैट कर देंगे थोड़ा सा, तो वो क्या करेगा, स्पीड, वाटर की स्पीड को स्लो कर देगा. तो वहाँ पर एक तो प्लांटेशन भी हो रहा है, तो दे विल हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल बिकॉज सॉइल इरोजन वहाँ नहीं हो पाएगा या कम होगा. दैट विल हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल. नाउ द थर्ड टाइप इज बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट. व्हाट हैपेंड, basically the water is the main source, main condition which is responsible for the soil erosion. Being the citizen of a country like India where the water is surrounded by three sides, our country is surrounded by water by three sides, and one side which is remain, that is also surrounded by the glacier, the mountain region. So here the quantity of water is present in large content, in high condition. That's why the water is the main source of soil erosion. So for preventing water to damage the normal area, the public area, वो नुकसान ना कर पाए पानी मिट्टी का हुआ या नॉर्मल जनता का या नॉर्मल ज़मीन का, इसके लिए वाटर के कंजर्वेशन के लिए, वाटर को बचाने के लिए या सॉइल इरोजन ना हो पाए इसलिए पानी को किस तरीके से संरक्षण किया जाए उसके लिए डैम्स को बनाया जाता है, बांध बनाए जाते हैं. ओके, वी शुड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट डैम एंड एम्बैंकमेंट अलोंग रिवर्स.
where the rivers are present, the river region of our country, there should be dam. Dam means बांध बनाना. So there should be dams that should be constructed so that it prevent the soil erosion by controlling the speed of the water. स्पीड ऑफ वाटर को कंट्रोल अगर करेगा तो बहाव कम होगा. अगर पानी का तो बहाव कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रीजन होगा वहाँ पर टॉप मोस्ट लेयर पे फोर्स प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो अपनी जगह पर पड़ी रहेगी या इरोजन कम होगा. सो द थर्ड कंडीशन इज बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. नाउ द फोर्थ वन इज by stopping overgrazing. The fourth condition is that by stopping overgrazing, one can prevent the soil erosion. One can prevent our soil from getting eroded. Okay. So the fourth one is overgrazing. That means the cattle, the animals which are present with the people, they used to graze over the field and the grasses were becoming lower in number and the soil holding capacity will also be reduced. That will result in the soil erosion. So by stopping overgrazing, that means the cattle feeding, the soil become prevented. So due to overgrazing by animal, the topsoil become loose and is easily blown or washed away. अगर ज़्यादा से ज़्यादा चारा जानवर खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासेस को वो खाएंगे तो जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको जो रूट्स बांध रही हैं वो लूज़ हो जाएंगी. जब वो लूज़ हो जाएंगी तो हवा के साथ या पानी के साथ वो ईज़िली बह सकती हैं. तो जब घास फूस नहीं होंगे उस कंडीशन में सॉइल लूज़ हो जाएगा और ईज़िली वाटर के साथ ब्लो कर जाएगा या जो हवा है उसके साथ ब्लो कर जाएगा. Stopping overgrazing can prevent soil erosion. If we prevent or stop the overgrazing of the field, it will surely prevent the soil erosion. Overgrazing can be stopped by erecting fences around the newly grown area. What we have to do? Where the overgrazing is done, जहाँ पे कैटल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उस एरिया को अगर हम चारों तरफ से हम तारबंदी कर दें या हम बाउंड्री वॉल कर दें तो ओवरग्रेजिंग उस एरिया में प्रिवेंट की जा सकती है. सो द फोर्थ कंडीशन वाज ओवरग्रेजिंग. सो इन द सॉइल इरोजन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन इन विच फर्स्ट मेथड वाज प्लांटेशन, सेकेंड वाज टेरेस फार्मिंग, देन आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड एम्बैंकमेंट, आफ्टर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट overgrazing, and these four are the measures which to be taken while prevention of soil erosion. These four we have discussed. Now let us revise. The first condition is that the topmost soft layer of the earth surface is soil. the धरती की जो सबसे ऊपरी सतह है, जो सबसे topmost layer है, इसी को हम soil कहते हैं. Second topic is it takes several years of various types of rock to change into soil. Basically the soil is formed by the rocks only. By the weathering of rock the soil is formed and it takes several years in the formation of a soil. Third condition is the blowing and carrying away of soil by natural forces is called soil erosion. When the air or the water or the natural conditions are responsible for the disturbance of the topmost layer of the soil, it is called soil erosion. Okay. Third point was this. The fourth point is the protection of soil from being washed away by natural forces is called soil conservation. The protection of soil from being washed away. मिट्टी की ऊपरी सतह या मिट्टी की सतह अपने आप खराब ना हो पाए, नुकसान ना हो पाए, पानी के साथ बह ना पाए या हवा के साथ ना बह पाए, अगर हम उन चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, उन चीज़ों को बचाते हैं तो हम मिट्टी को, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. सो दीज आर द पॉइंट एंड देयर इज अ न्यू टर्म्स रॉक ह्यूमस, सॉइल इरोजन एंड ओवरग्रेजिंग. यू हैव टू राइट द न्यू टर्म्स इन योर नोटबुक. That's your assignment work, and tomorrow I will share the exercises of the chapter. Okay, so that's all for today everyone. Thank you.